अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स पोर्शन हम आपका उठाने जा रहे हैं। द पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है दैट इज द मोशन। कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन मोशन इज दैट व्हाट डू वी मीन बाय टू टर्म्स वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय रेस्ट एंड मोशन। जस्ट we will see the definition of these two terms, rest and motion. These two terms can be understood with related to each other. अगर हम रेस्ट जानेंगे तभी हम जान पाएंगे मोशन क्या है, जब हमें मोशन पता होगा तभी हम जान पाएंगे रेस्ट क्या है। मीन्स these two terms they can be understood only related to each other. जब हम इन दो को रिलेट करेंगे तब हम इन दो को समझ पाएंगे। पहले हम देखेंगे रेस्ट। रेस्ट का स्टेट क्या होता है? An object is said to be at rest. An object is said to be at rest. Said to be at rest if it does not change its position. If it does not change its position with the passage of time, with time, with respect to surroundings, with respect to surroundings. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ सराउंडिंग्स के रिलेशन में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, हम कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को such an object is said to be at rest when the object is not changing its position with the passage of time. At a particular time, suppose it is an object A. It is an object. It is at position A when the time was t. Time does not stop. Say at time interval t dash, the object is at the same position A. At the same position means with the passage of time, time has changed from t to t dash. With the passage of time, the object has not changed its position. It is at the same position. It is at the same position. It is not changing its position with the passage of time, means that the object is at rest. The object is at rest. The object at rest is called, इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, it is called a stationary object. It is also called as a stationary object. Means when the object is at rest, it is also called as a stationary object. It is also called as a stationary object. For example, आप stationary object किस किस को कहेंगे? A tree, जो मूवमेंट नहीं करता है, a house, जो आपका मकान है, a hospital, a building, etc., etc. All these are the stationary objects. You can call them the stationary objects. Then comes the next term, that is the motion. Motion. Suppose it is an object. It is at position A at time t. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, जो टाइम t है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ये पोजीशन A पे है. During the passage of time at time t dash, the object has changed its position from A to B, and at time t double dash, दूसरे इंटरवल पे ऑब्जेक्ट दूसरी पोजीशन, यही ऑब्जेक्ट दूसरी पोजीशन पे एट पोजीशन C पहुंच गया. Means the object is not at rest. It is changing its position continuously with the time. With the passage of time, the object is continuously changing its position. And when the object is changing its position with the passage of time, with respect to surroundings, with respect to some reference point, we call the object is said to be in the motion. So when an object is said to be in motion, object is said to be in motion if it changes its position. If it changes its position with time, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, with time, with respect to surroundings, surroundings के रेफरेंस में, with the passage of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ, हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट मोशन में है.
ये ऑब्जेक्ट मोशन में है. फॉर एग्जाम्पल a car running on the road, a moving car, a moving car, एक कार जो रोड पे जा रही है, with every instant of time it is changing its position, it is changing its position, it is changing its position from one place to another. We may say that the car is in motion. Movement of the hands of the clock, movement of hands of clock, hands of clock. The hands of the clock are continuously moving in the clockwise direction. We may say that they are also in the motion. They are in the motion. This motion, if the object is slow moving object, if the object is slowly changing its position, it is difficult to experience such a motion, to observe such a motion when the motion is of the feeble nature. If the object is moving smaller distances, if the object is moving very small distances, such motion can be perceived very with difficulty. But if the motion is fast, if the object is a fast moving object, such a motion can be experienced very easily. Very easily. Means slow moving objects, yeah, motion of slow moving objects, can be experienced with difficulty. इसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी. जो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोली अपनी पोजीशन चेंज करता है, यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हाँ, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम अच्छी तरह से देख पाएंगे इजीली. Motion of fast moving objects can be observed easily. Moving objects can be observed easily. So by now you know that the difference between the 2 points. What is the state of motion of an object and what is the state of rest of an object? If the object is not changing its position with the passage of time with respect to surroundings, you say that the object is in motion, at rest. And if the object is continuously changing its position with the passage of time with respect to some reference point or with respect to surroundings, हम कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को that the object is in the motion, ये मोशन में है. This motion actually it is of 3 main types. Types of motion. Next thing, types of motion. This motion is of 3 types. Number 1, motion along a straight line. Motion along a straight line. Motion along a straight line. If the object is moving along a straight line path, if the object is moving along a straight line path, such a motion is called as a motion along a straight line, or it is also called as linear motion. याद रखना टर्म linear motion, इसको आप कहते हैं linear motion और motion along a straight line. Linear motion or motion along a straight line. Motion along a straight line. जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, हम ऐसी मोशन को कहते हैं, it is called as the linear motion or it is called as the motion along a straight line. It is called as the motion along a straight line. For example, the motion of an athlete. For example, motion of an athlete. For example, motion of an athlete on a track. एक ट्रैक पे कोई खिलाड़ी जा रहा है along a straight line path, तो ये हम कह सकते हैं ये लीनियर मोशन है इसकी. या free fall of an object
from the top of a building, from the top of a building, एक बिल्डिंग के टॉप से हम किसी चीज को नीचे फेंक देंगे, जो ऊपर से नीचे तक एक इस ऑब्जेक्ट की मोशन होगी, that will also be the linear motion, that will also be the linear motion or motion along the straight line. Then there is another type of motion that we called as the circular motion. Circular motion. Circular motion. It is also called as the angular motion, or rotational motion. दो और इसके नाम हैं, या इसको आप एंगुलर मोशन भी कहेंगे, या इसको आप दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, द सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन भी इसको आप कहते हैं. इसका मतलब क्या है? यहां पे when the object is moving along a straight line path, यहां पे when the object is moving along a circular path, object is moving along a circular path. जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे चलता है, हम ऐसे मोशन को कहते हैं, it is called as the circular motion. Such a motion is called as the circular motion. When the path of the motion is a circular one, when the path of the motion is a circular path, we call such a motion as the circular motion. For example, motion of the hands of the clock. Motion of the hands of the clock. जो एक क्लॉक है, क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो सर्कुलर मोशन, वो एक सर्कुलर पाथ पे चलते हैं. दे मूव, सपोज इट इज ए क्लॉक, ये इसके हैंड्स हैं, दे मूव फ्रॉम, या अगर इसका क्लॉक है, ये हैंड्स हैं, ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ मूव करते हैं. इस मोशन को आप कहेंगे सर्कुलर मोशन. एंड ऑल्सो यू माइट बी नोइंग दैट द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, motion of earth round the sun, or motion of moon round the earth, they are all examples of the circular motion or the angular motion or the rotational motion, what we call you, whatever name you call with them. And the third type of motion is that we called as the vibratory motion. Vibratory motion, you can call it with different names also. It is also called as the oscillatory motion, or you may call it with name to and fro motion, or you can also call it with back and forth motion. आप इसको मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं. ये सब के सब इसके नाम है. वाइब्रेटरी मोशन भी कहेंगे इसको आप, ऑसिलेटरी मोशन भी कहेंगे इसको आप, और इसको आप कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन भी. तो ये जो मोशन है वाइब्रेटरी मोशन जिसको आप कहते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे ये आपने देखा होगा पेंडुलम, ये जो एक पेंडुलम है, ये फिक्स है एक सपोर्ट से, ये इसकी थ्रेड है, ये और इसका बॉब है. इस पोजीशन पे, ये पोजीशन जो पेंडुलम की है, इसको आप कहते हैं मीन पोजीशन. इट इज कॉल्ड एज द मीन पोजीशन, और इसको आप दूसरा नाम भी कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन भी. इक्विलिब्रियम पोजीशन. It is the mean position or equilibrium position. Suppose if you move the bob a little rightwards, यहां इस डायरेक्शन में, और इसको यहां से रिलीज करेंगे आप, तो यहां से ये फिर वापस यहां आएगी इस पोजीशन पे. यहां से ये मैं थोड़ा डॉटेड में दिखाऊंगा यहां पे ताकि आपको समझ सके इस पोजीशन, इस पोजीशन. यहां से वापस, पहले तो हमने यहां से इस पोजीशन पे लिया, यहां से इसको छोड़ा, ये यहाँ इस पोजीशन पे फिर आएगी, इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये इस अपोजिट डायरेक्शन में इस पोजीशन पे आ जाएगी.
ऐसे जैसे एरो मैंने दिखाया, यहां तक पहुंचने के बाद ये फिर मीन्स ये जो मोमेंट ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम है, ये जो पोजीशन है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये दो पोजीशन जो मैंने यहां दिखाई, इनको आप कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। तो इन दो पोजीशंस के दरमियान इस बॉब की, जो पेंडुलम की जो बॉब है, इसकी मोमेंट रहती है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बैक टू मीन पोजीशन, फ्रॉम mean position back to extreme position in the opposite direction leftwards, and this process continues. This motion, when the which this motion, it repeats itself. This motion, it repeats itself over and over again about a fixed point. Such a motion is called as the vibrational motion or oscillatory motion or to and fro motion or back and forth motion, whatever name you call it as. So these were the three types of the motion: the motion along a straight line, linear motion along a circular path, that is called as the circular or angular motion, the vibratory motion, the oscillatory motion, when the object is moving at a fixed, when the motion gets repeated at over and over again about a fixed point, such a motion is called as the vibratory motion or oscillatory motion.